A very good morning to all of you, and a very warm welcome on this solemn occasion of human rights. 10th December is an opportunity to reaffirm the importance of human rights and to reassert our commitment to the goal of humanity, very much ingrained in the motto of NHRC, Sarve Bhavantu Sukhinah. It's a matter of great privilege to have amongst us the chief guest for today's function, Shri Nityanand Rai, Honorable Minister of State, Ministry of Home Affairs, who has joined us through the virtual mode from Andaman and Nicobar Islands. We heartily welcome you, sir. We also welcome the honorable members of the Commission, Justice P.C. Pant, Madam Jyotika Kalera, Dr. D.M. Mule, Secretary General of NHRC, Shri Bimbadhar Pradhan, other officers of NHRC. We also welcome the esteemed dignitaries, distinguished guests, ladies and gentlemen who are digitally connected with us. We start the occasion with lighting of the lamp and paying tributes to Ma Saraswati. I request the Honorable Chief Guest, the Honorable Members of the Commission, Secretary General of NHRC to kindly do the honors by lighting the lamp. I request Shubha Ma'am, please. The official song of NHRC strongly expresses our commitment towards the citizens of our country for protection of their human rights. Conceptualized by Dr. Lakshmi Shankar Vajpayee, a renowned poet, it was inaugurated on the occasion of Silver Jubilee celebrations of the Commission. I request the team to kindly play the NHRC song.
Thank you. As we celebrate the Human Rights Day every year on 10th December, NHRC organizes a series of events prior to this in a bid to spread awareness and sensitize the various sections of the society. This year, despite the COVID restrictions, we organized through the virtual mode a national debate for the students of national law universities across the country, a national debate competition for the Central Armed Police Forces, and a national declamation contest for the All India Police Forces of various states. To give a brief about the organization and its achievements, I invite the Secretary General of NHRC, Shri Bimbadhar Pradhan, who has recently joined the organization in the month of October this year, to kindly give the welcome address. Chief guest of this morning, Honorable Minister of State for Home Affairs, Sri Nityanand Rai ji, Honorable members of the Commission, Justice Sri P.C. Pant ji, Srimati Jyotika Kalra ji, Dr. D.M. Mule ji, former chairpersons and secretary generals of the Commission, chairpersons and the members of the State Human Rights Commissions, secretaries to the Government of India, representatives of the UN bodies, diplomats, special rapporteurs, monitors, core group members, members of the civil society, NGOs, media. Distinguished dignitaries, ladies and gentlemen, on behalf of the Commission, I extend a very warm welcome to the Chief Guest and all other guests and dignitaries on this occasion of Human Rights Day. 10th December marks the anniversary of the Universal Declaration of Human Rights, adopted in 1948 by India and other member states of the UN General Assembly. Universal Declaration of Human Rights is an embodiment of the aspirations of the people across the world for achieving equality, dignity, and peaceful coexistence. On this very day, we must recall the contributions of Srimati Hansa Mehta, who played a crucial role in drafting the Constitution of India and final draft of the Universal Declaration. She is recognized as the First Lady of the world for her contribution to the cause of human rights. We won our independence in 1947. Our Constitution came into effect in January 1950. The Indian Constitution is not merely a legal document, but represents the hopes and aspirations of billion-plus people. For all of us, democracy is not a gift, but a sacred trust. Every time a child or a woman is brutalized, the soul of India is wounded. Year 2020 has been extremely tough for the humanity due to COVID-19 pandemic. The social and economic impacts of this human health emergency is affecting disproportionately on all sections of the society everywhere. India also faces unprecedented challenges in context of COVID-19. The theme of Human Rights Day 2020 is Recover Better, Stand Up for Human Rights. The global campaign for Human Rights Day this year is centered on 4 pillars. A, end discrimination of any kind. B, address inequalities. C, encourage participation of all. D, promote sustainable development. India's recovery efforts, such as Atmanirbhar campaign and Honorable PM's Garib Kalyan Yojana, is in sync with these themes. No one is left behind. The Commission, cognizant of the adverse impacts of COVID-19, made the complaint handling process completely online through the HRCnet portal.
Our online complaint filing system is also linked pan-India to 3 lakhs common service centers. During March-November 2020, despite COVID-19 and the lockdown, with reduced and staggered staff strength, Commission has disposed of 40,000 plus cases out of total registered 46,000 cases. Commission also constituted a committee of experts on impact of COVID-19 pandemic and future response. The committee included civil society representatives, thematic experts, representatives of government ministries and departments. Based on the recommendations of these committees, the Commission has issued 12 advisories on the issues of rights of informal workers, rights of children, rights of persons with disability, right to food, right of transgender community, among others, to the union and state governments. Commission looks forward that these advisories are taken on board. We shall welcome additional discussion and inputs, insights on these critical human rights issues. The Commission values its partnership with civil society, media, and UN bodies. We look forward for your valuable inputs and suggestions on how we can work better. Commission has been publishing the annual English journal since year 2002. The Journal of the Commission is a valuable tool for good governance, and the annual journal gives us motivation to work relentlessly for the cause of human rights. India has been playing an important role in making development as a human rights issue. Our right to survival in face of climate change, our right to sustainable growth that leaves no one behind. We must take it forward in our global recovery efforts in coming years. India has historically played an important role in making development a human rights issue. The Indian tradition of Sarvodaya, the promise and guarantee of basic freedoms, justice and equality is alive and vibrant today. COVID-19 has made it clear that a strong base of human rights is our defense against all these emergency and the crisis. All of us are aware that the road ahead must be built on a strong foundation of human rights. The ideal way for the whole world to commemorate this day is to introspect what more can we do to live up to the letter and spirit of the sacred text of the Universal Declaration. We must take a pledge to uphold the ideals and principles enshrined in our Constitution and the Universal Declaration. Promotion and protection of human rights has to be a collective task of the whole of the society. Gender equality, universal health coverage, public participation, climate justice, and sustainable development to be the core themes. Let us resolve to act collectively with human rights front and center to recover from COVID-19 pandemic and build a better future for all. Let us act collectively to build a better future. Thank you. Thank you so much, sir. The greatness of humanity is not in being human, but in being humane. And the best way to find yourself is to lose yourself in the service of others. With these words of Mahatma Gandhi, I humbly invite Honorable Member NHRC, Justice Shri P.C. Pant, to kindly give the inaugural address.
Esteemed Chief Guest for this morning, Honorable Minister of State for Home Affairs, Sri Nityanand Rai ji, Members of Commission, Srimati Jyotika Kalra ji and Dr. D.M. Mule ji, Secretary General B. Pradhan Sahab, Ms. Shoko Noda, Resident Representative UNDP, Surajit Dey, Registrar Law, Joint Secretaries, Sri Khandelwal and Mrs. Anita Sinha, DIG Manjul Saini, other officers, dignitaries, ladies and gentlemen. First of all, I extend warm welcome to all of you on this International Human Rights Day. I am grateful to Honorable Minister of the State for Home Affairs, Sri Nityanand Rai ji, for having spared his valuable time to join us virtually on this occasion. His presence today reflects his concern and commitment for protection of human rights of all the people. We are indeed grateful to Sri Rai ji for his support to the Commission. This year has been very tough due to COVID-19 pandemic, requiring a cohesive response from the public health care system as well as from general public. The success of public health care systems is its response in dealing with grave situation depends on how deep-rooted are our fundamentals for respecting the human rights. It is a time to reaffirm our commitment that human rights should form the basis of all the state policies. Human Rights Day, as 10th of December is widely known, signifies the adoption of United Declaration of Human Rights in the year 1948 by UN General Assembly. The Declaration is an embodiment of the aspirations of the people across the world for ensuring life, liberty, equality, and dignity of individuals and peaceful coexistence. Universal Declaration of Human Rights continues to be the most important declaration as a source of inspiration for national and international efforts for promoting and protecting the human rights and fundamental freedoms. It provides a fundamental philosophy on the basis of which several legally binding international instruments have been adopted by most of the country, including India. UDHR has enriched and expanded the scope of human rights and promoted dynamic outlook. In addition, the core fundamental rights guaranteed by the Constitution to the people of India, namely right to life, right to liberty, right to equality, right against discrimination, right to freedom of religion, right to preserve culture, and right to constitutional remedies form the bedrock of our constitutional democracy. NHRC India, since its inception on 12th of October 1993, has consistently endeavored to broaden the ambit of human rights with the challenges of changing times towards the protection of basic rights of the people, to secure goals of justice, social, economic, and political, and also to secure liberty of thought, expression, belief, faith, and worship of the citizens, and encouraging the fraternity, assuring the dignity of the individuals. The Commission's constant endeavor over the last 27 years has been to make itself as much accessible to the people as possible. But extraordinary time requires extraordinary response. The Commission has also responded to the challenges created by COVID-19 pandemic by moving this year most of its activities from offline mode to the online mode.
it has tried to reach, NHRC has tried to reach out to the people from all walks of life, including those living in the remotest part of the country. In order to expand its outreach, the Commission has integrated its online complaint filing system with Common Service Portal of Government of India, which was very useful during this pandemic. It has also encouraged state governments and authorities to submit their reports online, which has helped us in speedy decision making and redressal of grievances. The Commission made significant contributions in mainstreaming a human rights centered approach in all the government policies during these testing times. As told by the Secretary General, deeply concerned about the rights of the vulnerable and marginalized sections of the society and migrant workers who have been impacted by the COVID-19 and the resultant lockdown, the Commission, based on advice of experts, has issued as many as 11 or 12 advisories on key human rights issues, particularly concerning rights of women and children, rights of prisoners, right to health, rights of informal workers, persons with disabilities, food security, nutrition, right to mental health, rights of LGBTI community, and also on business and human rights. To create human rights awareness, the Commission continues to bring out various publications such as its monthly newsletter and annual journal, both in English and Hindi. This year, the Commission organized its coveted internship programs for university students through virtual mode using online platform. The Commission also launched its Twitter handle and got official status to it, which resulted in expanding its outreach to the people. To promote and acknowledge cinematic and creative efforts in the field of human rights, the Commission, like previous year, continued to give awards for short films under its award scheme. All these efforts of the Commission to create awareness in the society have shown remarkable results. Commission, which received only 496 complaints in the first year of its establishment. Now, during 2019-20, it registered as many as 76,628 complaints for redressal of grievances. In last 11 months, during the period from 1/4/2020 to 30th of November 2020, while various parts of the country were impacted by COVID-19 pandemic, the Commission registered 46,544 complaints and disposed of 49,759, that is 3,000 more than the complaints received. And in 182 cases, the Commission awarded compensation of rupees 4 crore 75 lakhs and 25,000 to the families of the victims. In 32 cases of human rights violations, suo motu cognizance was taken. Enormous increase in number of complaints and disposal is indicative of the awareness of the human rights among the people and also their growing faith in the Commission. Also, this year we attempted to clear old cases as much as possible. At the international level too, our Commission, which is an A-accredited NHRI, has continued to play an active role in promotion and protection of human rights. Commission is a member of Global Alliance of National Human Rights Institutions Bureau, which is an important policy-setting body of GANRI. NHRC is also a founder member of Asia Pacific Forum of National Human Rights Institutions. On this significant day, let us pledge to rededicate ourselves to achieve a just and equitable society
by upholding the principles and ideals enshrined in our Constitution and universal declarations of human rights to protect and promote human dignity of all citizens of the country. I once again extend my sincere gratitude to our esteemed chief guest this evening, Shri Nityanand Rai ji, and look forward to hear his thoughts on this occasion of international importance. Thank you. Jai Hind. Thank you so much, sir. United Nations, the epitome of international peace and security, has a theme for all of us this year also. I request Ms. Shoko Noda, resident representative of UNDP, to kindly read the message of UN Secretary General. Honorable Minister of State of Home Affairs, Sri Nityanand Rai, Honorable NHRC members, also Secretary General, Your Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen. First, thank you very much for always inviting the United Nations to the Human Rights Day functions, and this is my honor message of UN Secretary General. COVID-19 pandemic has reinforced two fundamental truths about human rights. First, human rights violations harm us all. COVID-19 pandemic has had a disproportionate impact on vulnerable groups, including frontline workers, people with disabilities, older people, women and girls, and minorities. It has thrived because poverty, inequality, discrimination, the destruction of our natural environment, and other human rights failures have created enormous fragilities in our societies. At the same time, the pandemic is undermining human rights by providing a pretext for heavy-handed security responses and repressive measures that curtail civic space and media freedom. The second truth highlighted by the pandemic is that human rights are universal and protect us all. An effective response to the pandemic must be based on solidarity and cooperation. Divisive approaches, authoritarianism, nationalism, make no sense against a global threat. People and their rights must be front and center of response and recovery. We need universal, rights-based frameworks like health coverage for all to beat this pandemic and protect us for the future. My call to action for human rights spells out the central role of human rights in crisis response, gender equality, public participation, climate justice, and sustainable development. On Human Rights Day and every day, let's resolve to act collectively with human rights front and center to recover from the COVID-19 pandemic and build a better future for all. Thank you very much. Thank you so much, ma'am. One of the important mandates of the Commission is to disseminate knowledge and important developments in the field of human rights. For this, the Commission brings out its prestigious annual publication, Journal of the Human Rights Commission. I request the Honorable Chief Guest, Honorable Members of the Commission, Secretary General and other officers seated here to kindly do the honors and release Journal of the NHRC for this year.
और अब कार्यक्रम की वह कड़ी जिसमें हम सभी माननीय गृह राज्य मंत्री जी को सुनने के लिए उत्सुक हैं। उन्हें आमंत्रित करने से पहले संक्षिप्त में उनका परिचय देना चाहूंगी। श्री नित्यानंद राय जी का जन्म एक किसान परिवार में हाजीपुर, जिला वैशाली, बिहार में हुआ। सामाजिक कार्यों में अभिरुचि रखने वाले श्री नित्यानंद जी ने सन 1982 में छात्र जीवन में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से शुरुआत की। सन 1990 में भारतीय जनता पार्टी में आगमन कर पंचायत स्तर से राजनीतिक करियर की शुरुआत की। बिहार राज्य में पार्टी के विभिन्न पदों पर रहकर अपने कर्तव्यों का दृढ़ता से निर्वहन किया। वर्ष 2000 में हाजीपुर विधानसभा क्षेत्र से निर्वाचित होकर वर्ष 2014 तक लगातार 4 बार विधायक के पद पर चयनित होकर कार्य किया। वर्ष 2014 में उजियारपुर लोकसभा सीट पर निर्वाचित होकर वर्ष 2019 में दोबारा जीत दर्ज की। वर्तमान में लोकसभा सांसद, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के पद पर कार्यरत हैं। अपने अनेक सामाजिक कार्यों में विशेष है उनके द्वारा व्यक्तिगत रूप से अनेक नाबालिग व अनाथ बच्चों को गोद लेना व उनके जीवन में शिक्षा व उज्जवल भविष्य का संचारण करना। अपनी सार्थक छवि, ऊर्जावान कार्यक्षमता व राजनीतिक कौशल के लिए जाने जाते हैं। अत्यंत सम्मान के साथ हम आदरणीय केंद्रीय गृह राज्य मंत्री श्री नित्यानंद राय जी को उनके वक्तव्य के लिए आमंत्रित करते हैं। आज इस कार्यक्रम में उपस्थित राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के सदस्य माननीय न्यायमूर्ति श्री पीसी पंत जी, माननीय श्रीमती ज्योति कालड़ा जी एवं माननीय श्री DM मूले जी, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अन्य उपस्थित सदस्यगण, श्री बिंबाधर प्रधान जी, महासचिव राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, श्री RK खंडेलवाल जी, संयुक्त सचिव राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग एवं संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों एवं सिविल सोसाइटी के प्रतिनिधि भाइयों बहनों और खासकर आज यहाँ उपस्थित सभी राष्ट्रीय आयोग के उपस्थित महानुभाव गण, संयुक्त राष्ट्र एजेंसी एवं सिविल सोसाइटी के लोगों की उपस्थिति में आज सब आप यहाँ इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आप काफी संख्या में जुड़े हैं। आज हम मानव अधिकार दिवस के इस शुभ अवसर पर हम आप सबों को बधाई देते हैं और आप अपने सभी उद्देश्यों में सफल हो इसकी शुभकामना भी करता हूं। राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस की इस आयोजन में मुझे उपस्थित होने का मौका आप सबों ने दिया है, यह मेरे लिए सौभाग्य की बात है। यह आयोजन अपने आप में काफी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि ऐसे समय में यह आयोजित किया जा रहा है जब हम कोविड-19 महामारी से प्रभावित हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी मानव एवं मानवता के प्रति हमेशा संवेदनशील रहते हैं। मानवता की सेवा उनके जीवन का ध्येय है। अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकारों की संकल्पना को आमतौर पर पश्चिमी संकल्पना के रूप में जाना जाता है, परंतु भारत में मानव अधिकारों का अस्तित्व वैदिक काल से ही हो रहा है। मानव अधिकारों का सबसे महत्वपूर्ण उद्घोषणा प्रसिद्ध वैदिक मंत्रों में है
और जो भारत के राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के भी सर्वे भवन्तु सुखिनः के मूल मंत्र में प्रदर्शित है। सर्वे भवन्तु सुखिनः आपका मूल मंत्र है। वैदिक मंत्रों में जो पूरी श्लोक जो 4 पंक्तियों की आती है, पूरी मानवता की उसमें भावनाएं समाहित है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित दुख भाग भवेत्। सभी सुखी हों, सभी रोग मुक्त हों, सभी का जीवन मंगलमय बने और कोई भी दुख का भागी न बने, यह हमारे संकल्पना में है। भारत में महिलाओं और बच्चों के मानव अधिकारों का संरक्षण परिवार प्रणाली और सामाजिक ताने बाने में निहित है, जबकि पूरी दुनिया उनके अधिकारों के संरक्षण के लिए कानून बनाने की जद्दोजहद कर रही है। तथापि भारत में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और दिव्यांगजन ऐतिहासिक रूप से समाज के इन कमजोर वर्गों और वंचित तबकों में रहे हैं। समाज के इन कमजोर वर्गों को इन वंचनाओं से मुक्ति दिलाने के लिए संविधान में उनके प्रति प्रतिबद्धता प्रकट की गई है और इसी से प्रेरित होकर केंद्र की सरकार ने इन समूहों के कल्याण और विकास को उच्च प्राथमिकता दी है। ऐसे कमजोर वर्गों के अधिकारों की रक्षा तभी की जा सकती है जब वे न केवल अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हों, बल्कि उपचार तक उनकी पहुंच हो, यानी समाधान उन तक पहुंचे। अधिकारों के प्रति जागरूकता और उपचारों तक पहुंच एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इस मानव अधिकारों के संवर्धन एवं संरक्षण में स्थानीय पंचायतों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। इससे ध्यान में रखते हुए सरकार ने विभिन्न केंद्रीय कल्याणकारी योजनाओं में उन्हें और अधिक स्वायत्तता एवं वित्तीय शक्तियां प्रदान करके पंचायती राज प्रणाली को मजबूत करने का कार्य किया है। इस सदी में आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों के मूर्त रूप देने के लिए अन्य महत्वपूर्ण उपकरण डिजिटाइजेशन है। हमें व्यक्ति विशेष के किसी अधिकार के लिए डिजिटल प्रक्रिया द्वारा सहक्रिया करने की आवश्यकता है ताकि इसे पहुंच योग्य और पर्याप्त बनाया जा सके। हाल में सरकार द्वारा राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन की घोषणा इसी दिशा में उठाया गया एक कदम है। इसका उद्देश्य दक्ष, पहुंच योग्य, समावेशी, आम लोगों के बजट में पर्याप्त समय और सुरक्षित तरीके से वैश्विक स्वास्थ्य कवरेज युक्त एक राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य इकोसिस्टम का सृजन करना है ताकि सभी के स्वास्थ्य के अधिकार को मूर्त रूप दिया जा सके। देश में बेरोजगारी को कम करने के लिए स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया आदि माननीय प्रधानमंत्री जी का एक महत्वपूर्ण और महत्वाकांक्षी कदम है। गरीब एवं मध्यम वर्गीय युवाओं को इन कार्यक्रमों के तहत प्रशिक्षित किया जा रहा है ताकि वे स्वरोजगार प्राप्त कर सके अथवा लघु स्तरीय उद्यमी बन सके। इसके अतिरिक्त असंगठित क्षेत्रों एवं प्रवासी कामगारों के लिए रोजगार सृजन हेतु आत्मनिर्भर भारत योजना शुरू की गई है। यह सारी योजना इसलिए है कि मानव को एक सुखी जीवन मिल सके, मानव जीवन संपन्न हो सके और उनके जीवन के सभी जरूरतें जो एक जीवन को एक सामान्य रूप से सुखी बना सके, इसके लिए की गई पहल है। महिलाओं एवं बच्चों के सशक्तिकरण के लिए भी इसी प्रकार की पहलें की गई हैं। बीपीएल परिवारों को निःशुल्क गैस सिलेंडर उपलब्ध कराने के लिए उज्ज्वला योजना प्रारंभ की गई ताकि महिलाओं को रसोई घरों में लकड़ी जैसे ईंधनों को जलाने से उत्पन्न खतरनाक स्वास्थ्य समस्याओं का सामना न करना पड़े। लिंग असमानता को कम करने के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान
और सबके लिए स्वास्थ्य का अधिकार सुनिश्चित करने के लिए सामाजिक दृष्टिकोण एवं आदतों में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने हेतु स्वच्छ भारत अभियान चलाए गए हैं। इस महामारी के दौरान सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के माध्यम से प्रत्येक व्यक्ति के भोजन के अधिकार की रक्षा कर यह सुनिश्चित किया गया कि कोई भी भूखा न रहे। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों के मजदूरों को सशक्त करने के लिए मनरेगा के तहत दी जाने वाली मजदूरी में भी पर्याप्त वृद्धि की गई है। प्रवासी मजदूरों को कोविड-19 की स्थिति एवं बाद में मंदी से बुरी तरह प्रभावित हुए थे, उनके अधिकारों का संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने प्रवासी मजदूरों के खाते में सीधे बैंक ट्रांसफर उपलब्ध कराया। इसके अतिरिक्त सरकार ने फेरी वालों जो महामारी से प्रभावित हुए थे उनका व्यवसाय दोबारा शुरू करने के लिए वर्किंग कैपिटल लोन उपलब्ध कराया है। हालांकि मानव अधिकार दिवस मनाने के महत्वपूर्ण इस दिवस में उसके महत्व से इनकार नहीं किया जा सकता। यह वर्ष 1948 में संयुक्त राष्ट्र महासंघ द्वारा मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को अंगीकृत करने का सूचक है। वर्ष 1993 में जब राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना की गई थी, इसे भारत में मानव अधिकारों के इतिहास में एक महत्वपूर्ण विकास तथा समग्र रूप से विकसित विश्व के रूप में देखा गया है। इसने मानव अधिकारों के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु संस्थागत तंत्र को मजबूत रूप से सुदृढ़ करने को चिन्हित किया गया है। समय बीतने के साथ ही राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग भारत ने अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त की है और अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त करने की यह उपलब्धि आपके लिए एक महत्वपूर्ण है और भारत के लिए भी एक महत्वपूर्ण है। इसने संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद के गठन के दौरान महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है तथा परिषद द्वारा किए गए सार्वभौमिक आवधिक समीक्षा में सक्रिय रूप से भाग भी लिया है। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने अन्य मुद्दों के साथ साथ महिलाओं, बच्चों, दिव्यांगों तथा विस्थापित लोगों के अलावा स्वास्थ्य, शिक्षा के अधिकारों के मुद्दों पर भी महत्वपूर्ण पहल की है और आपकी इस पहल का परिणाम भी दिखता है। हाल ही में आयोग ने समाज के अत्यधिक कमजोर वर्गों के मानव अधिकारों को बेहतर संरक्षण हेतु सरकार के लिए दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। भारत सरकार मानव अधिकारों के कार्य तथा इस प्रतिष्ठित संस्थान को सुदृढ़ करने के लिए प्रतिबद्ध है। माननीय गृह मंत्री जी आयोग को मजबूती तथा दृढ़ता के लिए प्रतिबद्ध है। इस दिशा में उठाया गया एक कदम मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम में हाल में किया गया संशोधन है। आयोग में एक और सदस्य को शामिल करना, महिलाओं को सदस्य के रूप में समावेश करना, अन्य राष्ट्रीय आयोगों को सदस्यों के रूप में सम्मिलित करके सांविधिक पूर्ण आयोग को विस्तृत करना सरकार द्वारा इस दिशा में किए गए कुछ महत्वपूर्ण कार्य हैं। इसके साथ ही आतंकवाद से जूझने के लिए हमारे सुरक्षा बलों की दशाओं पर भी यथोचित विचार करना चाहिए। सुरक्षा बल न केवल अत्यंत शौर्य का प्रदर्शन कर रहे हैं बल्कि मासूम नागरिकों के अधिकारों के प्रति भी अत्यंत संवेदनशीलता का परिचय भी दे रहे हैं। मानवता बेबस न हो, मानव अधिकारों का हनन न हो, कमजोर, वंचित, उपेक्षित, दिव्यांग महिलाएं किसी भी प्रकार से कहीं भी किसी के द्वारा प्रताड़ित या अपमानित न हो। कोई माननीय प्रधानमंत्री जी के कमजोर और वंचित वर्गों के लिए कल्याणकारी कार्यों तथा न्याय से वंचित न रह जाए, इस हेतु राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग को संवेदनशील सक्रियता रखनी पड़ेगी। आप सबके द्वारा मानव अधिकार को संरक्षित करने के जो कार्य किए जा रहे हैं और जिसके माध्यम से मानवता सम्मानित भी हो रही है और मानवता की सेवा भी जो आपके द्वारा किया जा रहा है। जब मानव अधिकार पर
किसी के द्वारा, चाहे व्यक्ति हो या संस्था हो, जब उसे अपमानित या प्रताड़ित करने के काम की सूचनाएं आपको मिलती है और आपके द्वारा जो उसे न्याय मिलता है, वह न्याय निश्चित रूप से एक भारत को तो मजबूत बनाता है, भारत की उस परंपरा को कि भारत हमेशा अपने सुबह की प्रार्थना से लेकर शाम के भजनों की शब्दों में विश्व के कल्याण, मानवता की सेवा और विश्व बंधुत्व की कामनाओं के साथ जो संदेश बिखरता है, वह संदेश वर्तमान में मानव अधिकार आयोग भारत जो देने का काम कर रहा है, इसकी प्रशंसा जितनी की जाए वह कम होगा। मैं इस समारोह के अवसर पर राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के एवं इनके सभी महत्वपूर्ण सदस्यों को बधाई देता हूं तथा हमारे संविधान में प्रतिष्ठित सिद्धांतों एवं विचारों को कायम रखते हुए एक न्यायपूर्ण एवं उत्तम समाज के निर्माण हेतु इस कार्यों में आप हमेशा सफल हो, इसकी मैं कामना करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। मानव अधिकार दिवस के इस शुभ अवसर पर पुनः आप सबों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। आपके इस प्रेरक और प्रशंसापूर्वक उद्बोधन के लिए धन्यवाद माननीय मंत्री जी। As we come to the end of this program, I request Joint Secretary NHRC Shri R.K. Khandelwal to formally deliver a vote of thanks. Good morning, Namaskar. Chief Guest, Honorable Minister of State, Ministry of Home Affairs, Shri Nityanand Rai ji, Honorable Members, National Human Rights Commission, Justice P.C. Pant ji, Mrs. Jyotika Kalra ji, Dr. D.M. Mule ji, Secretary General NHRC, Shri Bimbadar Pradhan ji, Resident Representative UNDP, Madam Shokonada, distinguished invitees, senior officers and staff of NHRC, members of media and civil societies, ladies and gentlemen. I consider it a privilege to propose vote of thanks on this occasion of Human Rights Day function organized by the National Human Rights Commission to commemorate the 72nd anniversary of the adoption of the Universal Declaration of Human Rights on 10 December in 1948 by the United Nations General Assembly. On behalf of National Human Rights Commission, I would like to express my sincere thanks to the Honorable Minister of State, Shri Nityanand Rai ji, Ministry of Home Affairs, for having kindly consented to be the chief guest and virtual presence to grace this important occasion. Sir, we are indeed grateful to you for your virtual presence and also for sharing with this august gathering your vision for the realization of human rights in our country. Your thought-provoking address has reiterated the need for each one of us as conscientious citizens of the country to do our utmost in upholding human rights and creating a human right regime in our society. I would also like to take this opportunity to extend my sincere gratitude to Honorable Justice Shri P.C. Pant, Member NHRC, for sharing his immensely valuable views with us on this important occasion. And I am also thankful to Madam Kalra and Dr. Mule, members of the Commission, for their gracious presence today. I would like to thank the chairpersons from the sister national commissions, honorable judges of the Supreme Court and High Courts, chairpersons of state human rights commissions, former chairpersons and members of the NHRC, senior officers of the Government of India and state governments, representatives from armed forces, police and central paramilitary forces, members of the Commission's core groups,
special rapporteurs, and special monitors of the Commission, members of the editorial board of NHRC journals, for their valuable virtual presence today and their continued support. I would also like to express my thanks to the Madam Shoko Nada, Resident Representative UNDP, officials of OHCHR, Ganhari, the APF, and other UN agencies, diplomats, human rights defenders, NGOs, and other dignitaries for attending this function through virtual mode. My deep appreciation goes to the representatives of the print and electronic media for their interest to cover the function, which will go certainly a long way in spreading human rights literacy and awareness across the country. Last but not the least, I must thank all the officers and staff of the Commission, especially our National Informatics Center, our IT, admin, and coordination teams who have worked tirelessly in organizing this function successfully. Under the able guidance of our esteemed Secretary General, Sri Bimbadhar Pradhan, sir, without your active cooperation, guidance, and support, this would not have been possible to organize this function so successfully. A word of appreciation is also for the authors of the journal for their efforts which have gone into the release of the NHRC journal today. Today, on this significant occasion, the Commission, while acknowledging the achievements made in earlier years, seeks to rededicate itself to its mission of protecting and promoting the unassailable rights of the people of the country with even greater vigor. Before I conclude, I would like again to reiterate the theme of this year on battle against COVID-19. Recover better, stand up for human rights. Let us all pledge to stand up for human rights during this pandemic and fight against COVID-19. Ladies and gentlemen, I thank you once again for gracious virtual presence today. Thank you. Namaskar. Now I request all the dignitaries to please rise from seats for national anthem. जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे. Thank you, sir. With the permission of chair, I declared this program as closed. Thank you. Namaskar.